Hello students and welcome to my channel. In this lecture we will be completing the miscellaneous exercise as well as the chapter. Okay, so let's begin. We are on question number 9. Here, find x if this relation is given to you. So we have multiplication of 3 matrices and the result is 0. So you want to find the value of x. Now students, यहाँ पे we have a matrix of the order 3 by 3. Here you have the matrix of the order 3 by 1. So let's first see the multiplication of these two matrix and the result of these two will be multiplying with this matrix. तो यहाँ पे इसका ऑर्डर है 3 by 3, यहाँ पे इसका ऑर्डर है 3 by 1. सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड द नेट ऑर्डर इज 3 by 1. तो 3 by 1 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 एलिमेंट्स. विच आर दोस एलिमेंट्स? वी हैव a11, a21 एंड a31. ओके, सो a11 कैसे मिलेगा हमको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ओके, सो लेट अस फाइंड दैट. सो वी गेट x plus 0 plus 2. a21 you are going to get second row first column, so you get 0 plus 8 plus 1. And a31 third row first column you get 2x plus 0 plus 3. Okay, so we got a matrix of the order 3 by 1. यहाँ पे इसका order है 1 by 3. Okay, so again multiplication is possible between them and the net order what you're going to get is 1 by 1. So let us multiply 1 by 1 मतलब एक ही रो एक ही कॉलम है. Okay, so you get x into x plus 2 minus 5 into 9 minus 1 into 2x plus 3. So like this relation you get. Okay, so now if you open the bracket you get x square plus 2x minus 45 minus 2x minus 3 is equal to राइट हैंड साइड पे ये जो जीरो है वो एक्चुअली क्या है? जीरो मैट्रिक्स है. तो इसका ऑर्डर हम लोग क्या लेंगे? 1 by 1. ओके, सो नाउ वी कैन से इफ यू सिंप्लीफाई दिस इट इज x square minus 48 is equal to 0 by law of equality of matrices. So x square equal to 48. If you simplify this you get x is equal to plus minus 4 root 3. Okay, let's move ahead to the 10th question. A manufacturer produces 3 products X, Y, Z which he sells in 2 types of markets. Annual sales are indicated below. So there are 2 markets, 1 and 2, and there are 3 products being manufactured. Okay, X, Y and Z which are sold in market 1 and market 2. So पहले टेबल को एनालिसिस कर लेते हैं. So there are 3 products X, Y, Z. ये X, Y, Z आपको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है. I am just explaining you. Okay, so can you tell me कि मार्केट 1 में X के कितने प्रोडक्ट सेल होने वाले हैं? There are 10,000 products of X which are going to be sold in market 1. There are 2,000 products of Y which are going to be sold in market 1. And there are 18,000 products of Z which are going to be sold in market 1. Likewise for market 2. Now in the first part of the question, unit sale price of XYZ are rupees 2.5, 1.5 and 1. Unit sale price means what? एक product X का the selling price is rupees 2.5. One product of Y has the selling price 1.5 and one product of Z has the selling price rupees 1. Find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. Now students थोड़ा सा लॉजिक यूज कर लेते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 2.5 है तो 10,000 प्रोडक्ट्स का कितना होगा? 10,000 इंटू 2.5. वैसे ही Y के एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 1.5 है तो 2,000 Y के प्रोडक्ट्स का कितना होगा? 2,000 इंटू 1.5. लाइकवाइज फॉर Z इट इज 18,000 इंटू 1. तो उसको हमको मैट्रिक्स यूज करके इवेल्युएट करना है. ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट. सो वी आर राइटिंग हियर द यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर रुपीज 2.5, 1.5 and 1 respectively. Okay, so we have understood the logic that we want to multiply 10,000 into 2.5 plus 2,000 into 1.5 plus 18,000 into 1, right? So let's see the solution. So the matrix representing the revenue in market 1 is, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? The products x, y, z. This is the matrix for representing the product और यहाँ पे this is the matrix representing the selling price of 1 unit. Okay, so if this we are choosing the order 1 by 3 तो इसका ऑर्डर हमको क्या लेने पड़ेगा? 3 by 1. so that the result is a matrix of the order 1 by 1. तो ये अगर 1 by 3 का ले रहे हो तो ये लेना पड़ेगा 3 by 1. Okay, so now if you multiply you get 10,000 into 2.5 plus 2,000 into 1.5 plus 18,000 into 1. So you get this matrix. If you simplify this you get 46,000. Okay, likewise matrix representing the revenue in the market 2. तो यहाँ पे जो number of products है वो 6,000, 20,000 and 8,000 that you are going to take in the first matrix and उनके selling price का matrix तो same ही रहेगा. Okay, so here it is. So we are going to get 6,000 into 2.5 which is 15,000 plus 20,000 into 1.5 which is 30,000 and 8,000 into 1 which is 8,000. So you get the total revenue of the market 2 is 53,000. Okay, hence the total revenue of market 1 is rupees 46,000 and that of market 2 is 53,000. तो हमारा part A solve हो चुका है. Coming to the part E. Now यहाँ पे he is given the unit cost of the above 3 commodities are.
तो ये जो हमको मैट्रिक्स मिल रहा था वो सेलिंग प्राइस का मैट्रिक्स था, ये जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कॉस्ट प्राइस का मैट्रिक्स है। ओके, सो यू वांट टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अभी स्टूडेंट्स प्रॉफिट मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग ने यहाँ पे पार्ट ए में क्या फाइंड किया, वी हैव फाउंड आउट द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस, एंड देन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल गिव यू द ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? सो लेट्स गो विद द कॉस्ट प्राइस नाउ. The unit cost prices of x, y, z are 2, 1 and 0.5 respectively. So the matrix representing ये matrix तो सेम ही रहेगा 10,000, 2,000 and 18,000. This is for market 1 and उनके cost price यहाँ पे ले लेंगे 2, 1 and 0.5. So again if you multiply you are going to get 31,000. This is the cost price for market 1. तो profit in market 1 क्या हो जाएगा, selling price जो हमको मिला था 46,000 और you can say the revenue minus the cost price which is 15,000. Likewise, you are going to say the matrix representing the cost in the market 2. So यहाँ पे elements क्या है 6,000, 20,000 and 8,000 and यहाँ पे क्या आ जाएगा, this one same matrix, so 2, 1 and 0.5. So if you do the multiplication, you are going to get the answer as 36,000. तो ये है cost price for the market 2. So the profit in the market 2 is what? The selling price what you had obtained 53,000 minus 36,000. So your answer is 17,000. तो पहले मार्केट पे प्रॉफिट कितना हो रहा था 15,000 एंड द सेकंड मार्केट द प्रॉफिट इज 17,000. सो इफ यू ऐड देम सो दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 32,000. समझ में आया सर? ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू वांट टू फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. अभी स्टूडेंट्स ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में मेन थिंग क्या है पता है, जस्ट टू फाइंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एक्स. ओके, तो वो भी सिंपल ही है. देखो, यू कैन स्टार्ट विद द गिवन कंडीशन x इंटू द मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. नाउ कैन यू से इट इज ऑफ द फॉर्म x इंटू a इक्वल्स टू b. ओके, सो x, let the order of the matrix x be m by n. We have to find this. This is a and this is b. Now xa is possible क्योंकि xa डिफाइंड है. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x का ऑर्डर लिखो m by n, मैट्रिक्स ए लिखो जिसमें ऑर्डर है 2/3 एंड द रिजल्टेंट द नेट ऑर्डर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हाट यू आर गेटिंग इज योर मैट्रिक्स बी विच इज हैविंग द ऑर्डर 2/3. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई कर दो. सो सिंस द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल बिटवीन देम, तो ये दोनों सेम होता है तो n का वैल्यू डायरेक्टली हमको यहाँ से 2 मिल जाएगा एंड द नेट ऑर्डर व्हाट वी गेट स्टूडेंट्स इज व्हाट m/3. बट यहाँ पे नेट ऑर्डर क्या है 2/3, तो m/3 सेम एज 2/3, तो m का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2. So that is why your x is going to have the order 2/2. Clear? So let the matrix x of the order 2/2 be a b c d. तो हमको अभी a b c d find करना है. So again we go to this relation now. xa is equal to b. Okay, so x into a is equal to b. Now सबके orders लिख दो. तो multiplication is possible. Net order you get 2/3. Okay, so हमको multiplication तो अभी आता ही है. So first row first column will give you a11. So we get a plus 4b. Then 2a plus 5b, then 3a plus 6b, then you have go to second row, so c plus 4d, then 2c plus 5d and 3c plus 6d, and that is equal to this matrix. Okay, now बीच में इक्वल साइन है तो we say by equality of matrices. now student सब एलिमेंट्स इक्वेट करने की जरूरत नहीं है. देखो a plus 4b को इक्वेट करो तो एक इक्वेशन मिलेगा. लाइकवाइज इसको इक्वेट करो तो यू गेट अ सेकेंड इक्वेशन. Then c plus 4d you equate, you get third equation, and 2c plus 5d you equate, you get a fourth equation. No need to equate these two elements. Okay, now we will solve 1 and 2 and we will solve 3 and 4 to get the values of a, b, c, d. Okay, if you want to eliminate now a, so what we are going to do, equation 2 minus 2 times equation 1. So if you perform that operation, a will get eliminated and you get the value of b is minus 2. Now put this value of b in equation number 1 and you get the value of a. लाइकवाइज इधर आ जाओ, हमारे पास c प्लस 4d है और 2c प्लस 5d है, तो c को एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 4 माइनस 2 टाइम्स इक्वेशन 3. ओके, सो दिस विल एलिमिनेट c एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ d एज 0. पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 3 एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ c एज 2. सो वंस यू गॉट a b c d you can get the value of x which is 1 minus 2 2 and 0. Simple. Okay, so let's move to the 12th question. Now this is a sum again of mathematical induction which we have seen in the last lecture. So a and b are square matrices of the same order. तो a and b क्या है, square matrices of the same order such that ab equal to ba. ये condition satisfied है. Then prove by induction ab raised to n is equal to b raised to n into a
एंड सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है ए बी द होल रेस टू एन इज ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन. Okay, so let's start with the first part. You want to prove that AB raised to n is equal to B raised to n into A. तो याद है स्टूडेंट, the first step in such type of question is let Pn denote AB raised to n is equal to B raised to n into A. Now 3 step procedure है, आपको याद है. तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, टू प्रूव दैट P of 1 इज ट्रू. तो P of 1 ट्रू प्रूव करने के लिए LHS में हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये मिलेगा हमको AB raised to 1 विच इज इक्वल टू AB. RHS पे आ जाओ, n का वैल्यू 1 पुट करो तो क्या मिलेगा, b रेस टू 1 इंटू ए, तो यू गेट BA. बट ही हैज गिवन दैट BA इज इक्वल टू AB, तो मैं इसको AB से रिप्लेस कर सकता हूँ. यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है. तो डिड वी गेट LHS इक्वल टू RHS? यस, देयरफॉर यू कैन से दैट P of 1 इज ट्रू. स्टेप नंबर 2, यू अज्यूम दैट P of K इज ट्रू. ओके, सो यहाँ पे जो रिलेशन है हमारा उसमें n के बदले क्या पुट करेंगे, K, तो यू गेट AB रेस टू K इज इक्वल टू B रेस टू K इंटू A. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1. Moving to the step number 3, you have to prove that P of K plus 1 is true. Okay, so you start with LHS. Okay, इसमें n के बदले क्या पुट करेंगे, K plus 1, तो you get A B raised to K plus 1. So if you apply the law of indices, you are going to get your A into B raised to K into B raised to 1. Okay, but from equation 1 what relation you have, A into B raised to K is same as B raised to K into A. तो ये दोनों जो एलिमेंट्स है उसके बदले क्या लिख सकते हैं, B raised to K into A, and this B remains as it is. ओके, नाउ सिंस ए बी इक्वल टू बी है, तो ए बी इक्वल टू बी है, तो मैं ये ए बी के बदले बी ए लिख सकता हूँ. ओके, सो नाउ द अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसिस दिस इज गोइंग टू बिकम बी रेस टू के प्लस 1 इंटू ए. समझ में आ रहा है? नाउ सी द आर एच एस स्टूडेंट्स, आर एच एस ऑफ दिस, इमेजिन यू आर पुटिंग एन के बदले के प्लस 1, तो आर एच एस में हमको क्या मिलता है, बी रेस टू के प्लस 1 इंटू ए. ओके, सो दैट्स वॉट योर आर एच एस एंड आर एच एस आर सेम. Okay, so what do you conclude from steps 1, 2 and 3, and by principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to n. Clear? Coming to the second part of the proof, we write a proof to prove that AB the whole raised to n is A raised to n into B raised to n. Same procedure आपको follow करना है. So first step क्या है, let P of n denote. Okay, so this is the relation. Step number 1, to prove that P of 1 is true, तो यहाँ पे n के बदले में क्या पुट करूँगा, 1, तो I get AB raised to 1 which is AB. ओके, मूविंग टू द RHS, यहाँ पे n के बदले क्या पुट करना है, 1, सो यू गेट A रेस टू 1 इंटू B रेस टू 1 विच इज AB. सो LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर P of 1 इज ट्रू. इन स्टेप नंबर 2 व्हाट डू वी डू दैट, P of K इज ट्रू, अज्यूम कर लेते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, AB द होल रेस टू K इज A रेस टू K इंटू B रेस टू K. दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ इन स्टेप नंबर 3 यू वांट टू प्रूव दैट P of K plus 1 इज ट्रू. ओके, कमिंग टू द LHS, यहाँ पे n के बदले क्या पुट कर रहे हैं, K plus 1, तो यू गेट AB रेस टू K plus 1. ओके, इफ यू अप्लाई लॉ ऑफ इंडाइसिस तो ये क्या हो जाएगा, ए बी रेस टू के इंटू ए बी रेस टू 1. ओके, नाउ ए बी रेस टू के का वैल्यू इक्वेशन 1 में हमको क्या मिला है, ए रेस टू के इंटू बी रेस टू के, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू के इंटू बी रेस टू के, एंड ए बी रेस टू 1 इज व्हाट, ए बी. नाउ स्टूडेंट्स वी आर यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ग्रुप कर रहा हूँ. ओके, आई एम कंबाइनिंग दिस टू एलिमेंट्स इन वन ग्रुप. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, बिकॉज वी हैव बी रेस टू के इंटू ए का वैल्यू which I can replace by AB raised to K. Okay, that is the reason we are combining them. तो ये हमको मिलने वाला है A raised to K into A into B raised to K into B. Now, if you further apply law of indices, तो A raised to K into A वो क्या हो जाएगा, A raised to K plus 1, and B raised to K into B is going to become B raised to K plus 1. Now students, imagine this is your RHS. Yes, if you put n के बदले K plus 1 in your RHS, you get A raised to K plus 1 into B raised to K plus 1, which is your RHS. Okay, now we write a concluding statement. यही statement वापस लिखना है from steps 1, 2 and 3. You have proved your sum. Clear? Moving to the 13th question, which is an MCQ question. Matrix A is given to us such that A square equal to I. Then you have to choose one option. Now this condition के साथ चालू करते हैं. A square equal to I means A into A is equal to what? Identity matrix. I यहाँ पे 2 by 2 का लेंगे क्योंकि A 2 by 2 का मैट्रिक्स है. ओके, इफ यू डू द मल्टीप्लीकेशन यू गेट 4 एलिमेंट्स. ओके, जिसमें ये दोनों 0 हो जाएंगे. सो इफ यू इक्वेट द LHS इन द RHS मैट्रिक्स, तो व्हाट वी गेट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज 1. सो इफ यू टेक बोथ द टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज 0, विच इज योर ऑप्शन नंबर C. सिंपल. कमिंग टू द 14th क्वेश्चन, इफ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन which of the option is correct? Matrix A is what? Symmetric and skew symmetric. अभी symmetric का definition क्या होता है? A dash is equal to A.
एंड स्क्यू सिमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए. तो कैन यू इक्वेट बोथ द ए डैश, तो कैन आई से ए इक्वल टू माइनस ए. So if this comes on the left hand side, you get 2a equal to 0. Therefore, a is equal to 0 means a is a 0 matrix. Okay, so your option B is correct. Okay, coming to the 15th question, which is the last sum of this exercise as well as the chapter. If A is a square matrix such that A square is equal to A, then I plus A the whole cube minus 7A का value क्या है? Okay, let us find that. I plus A the whole cube minus 7A. Is it of the form, students, A plus B the whole cube? इसका formula क्या है? A cube plus B cube plus 3A square B plus 3AB square. Okay, so on applying this formula, I am going to get I cube plus A cube plus 3I square A plus 3IA square minus 7A. Now students, you know I cube is same as I. A cube को क्या लिख सकते हैं? A square into A लिख सकते हैं. I square is same as I. And A square is given to us as A. तो ये A square के बदले में क्या लिखूंगा? A. And this 7A as it is. Now A square is A, right? तो ये A square के बदले वापस A लिखो. And identity matrix into any matrix is your same matrix. And same thing you get here, I into A is same as A and minus 7A. Now what is this again? A square. तो उसको मैं A से replace कर सकता हूँ. So that is why I get I plus A plus 3A minus 7A. So ये सारे A terms cancel हो जाएंगे and you get your answer as I. So students, it was fun teaching you matrices. I hope you have understood the chapter very well. Please like, share, subscribe my channel. And please do comment if you require any other chapter so that I can try my best to upload it as soon as possible. Till then, take care, goodbye, and wish you good luck.